Most of us are, I suppose, ambivalent about our capital city. Its broad avenues, late colonial architecture, and a general air of well-ordered self-importance goes well with the popular notions of what the nation's premier city and seat of government should be like. When Lutyens' aging model was given a multi-crore rupee facelift before the Commonwealth Games, the new highways, flyovers, and tourist hotels made our Rajdhani, Hamari Delhi, presentable as well as patrician. After Delhi was declared the new capital of India in December 1911 by King George V at the Delhi Darbar, Viceroy Lord Hadringe wasted no time in shifting his base from Calcutta. By March 1912, he arrived in Delhi with all the paraphernalia of the Viceroyalty. On February 10, 1931, Viceroy of India, Lord Irwin, formally inaugurated New Delhi at 11 a.m. Nearly 20 years after King George V had announced the shifting of India's capital from Calcutta to Delhi. I think there were a number of reasons for shifting the capital to Delhi when the decision was taken. The first was that Calcutta had become very crowded and the Bengalis had become very hostile to the British Raj. The British regarded the Bengalis as the centre of terrorism. And I think finally the British increasingly saw themselves as inheritors of the Mughal Empire. When they had these Delhi Darbars, they modelled themselves on Mughal emperors. They got all the princes to come as if they were there at the court of Shah Jahan. And Delhi, with its succession of sultanates, followed by the Mughal Empire, had been seen for many centuries as the centre of legitimacy, the centre of political legitimacy in northern India. And so the British, intent on fulfilling their role as inheritors of Indian empire, thought it was a more sensible place to rule from. So there was a whole range of different reasons for moving. Historically, Delhi is one of the world's greatest cities, containing an astonishing array of forts, tombs, mosques, and government buildings constructed over the past 1,000 years. A much more recent peek at Delhi and its metamorphosis reveals all the amenities required for modern urban existence. Glitzy malls, plush green parks, extravagant farmhouses, grand roads, ever-increasing flyovers. It appears that this rapid urbanization is slowly bulldozing the last remnants of this city's glorious past. As more and more multinationals make their way into the capital, everyone seems to be caught in a rat race and has no time to stand and admire the marvels of the past which lie haunted and forgotten. The important sort of markers in Delhi's urban history, or the capital cities of Delhi, is that the very first one were built by the Rajput rulers, the Tomar and the Chauhan rulers. Now, as I said, there's very little that remains of those cities because one is the vagaries of time. Secondly is that a lot of them were destroyed by later conquerors. But we can see some architectural construction from those times because, for instance, if you've been to the Qutub Minar, in the Qutub complex, you'll see these very, very highly carved, very beautiful stone columns, which are supposed to have been reused from the earlier cities. So we can say that, you know, they're very highly skilled in stone carving, stone construction. Then we have the so-called, the slave dynasties, the Islamic rulers, whose cities range from those at Mehroli to Tughlaqabad, etc. Now, what happens in all these cities really is, again, as I said, there is a great regard for the local ecology of Delhi. Most of this continued like this till you have Shahjahanabad, which is the Mughal city of 17th century Delhi. And Shahjahanabad, there are some marked differences from the earlier cities. There are some similarities to the cities of Indraprastha and Firoz Shah Kotla. What happens is that this is on lower ground. You're no longer on the Aravali really, and right next to the Yamuna river banks.
And then of course you have British Imperial New Delhi, which marks a major change, because here you're no longer concerned with the ecology really of the area, with the culture. Here you're concerned in making a paramount political statement. So the older concepts of having built area that shades open area, living outdoors, all that changes, because your inspiration is no longer indigenous, but it's looking west. Delhi is a city of traumas. You won't be able to understand anything if you don't realize that everyone here today is trying to forget the horrifying things that have happened in their families. Delhi was destroyed by the Britishers in 1857. It was destroyed again by partition in 1947 and then torn apart by the anti-Sikh rampages of 1984. The stories of families who have been torn apart by the returning memories of partition horrors. Memories they had successfully buried for 60 years. लाहौर में मैं 8 अगस्त से निकला था। मैं 8 अगस्त से मैं और मेरे पिताजी वहाँ थे, सिर्फ बाकी सारी फैमिली हम सोलन में छोड़ आए थे। तो उस वक़्त ये इतना हॉरिबल माहौल था कि मैं अपने कॉलेज पहले जाया करता, मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था, तो मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कॉलेज वैसे भी बंद था। तो जब वापस आता था मैं साइकिल पर, तो ऐसा ख़तरनाक होता था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल सन्नाटा। तो एक दिन की बात है कि मैं आ रहा था साइकिल पर, तो अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा तगड़ा मस्टंडा गंजा बिल्कुल साइकिल पर मेरे को फॉलो कर रहा था। और मैंने आई कुड सी कि उसके बाद एक लंबा चाकू भी था, तो वो मेरे को मारने आ रहा था। तो मैंने कहा अब क्या करूं। मैंने साइकिल तेज़ की तो कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरे को, उसने भी तेज़ कर ली। तो अचानक वहाँ सामने एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस था, उसका जो पोस्ट मास्टर था मेरा वाकिफ़ था थोड़ा, तो मैंने साइकिल समेत पोस्ट ऑफिस में घुस गया और मैंने कहा मौलवी साहब सलाम अलैकुम। तो उन्होंने, उस गंजे ने सोचा कि ये तो मुसलमान ही है, सलाम अलैकुम बोल रहा है, और पीछा छोड़ के चला गया। तो मेरी जान बच गई। तो मेरे पिताजी उस वक्त हम वो थे अपने वर्कशॉप में, ही वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मैंने उनसे, वो वापस जब आए घर, तो तब तक वो बिल्कुल तैयार नहीं थे वापस लाहौर छोड़ने को। तो उस दिन 7 अगस्त की दिन है। तो मैंने फादर से कहा कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, आज इस तरह से बच के आया हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा कल चलते हैं। तो फिर हमने दूसरे दिन वहाँ से चलने का फ़ैसला किया। तो वहाँ से जब हम रेलवे स्टेशन की तरफ चले, एक टांगा घोड़ा टांगा जानते हैं आप, उसमें हम बैठे हुए थे। हमने एक छोटा सा सूटकेस अपने कपड़ों का उठाया और एक रेडियो था हमारे पास। हम वहाँ से स्टेशन की तरफ आए और सारे रास्ते यही डर था, पता नहीं स्टेशन पर भी पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सब तरफ एकदम सन्नाटा था। पर एनीवे पहुँच गया स्टेशन पर। और मेरे फादर जो थे उन्होंने कहा मैं सोलन जाता हूँ और तू दिल्ली जा। तो हमने दोनों ने डिफरेंट ट्रेन्स पकड़ी और वहाँ से मैं अभी ट्रेन पे बैठे ही थे तो कुछ शोर पड़ना शुरू हुआ स्टेशन पर। तो हमने कहा अब तो पता नहीं क्या होता है। इतने में वो मतलब कि गार्ड ने विसल बजाई, झंडी दिखाई और मेरी गाड़ी तो चल पड़ी। अब फादर की गाड़ी का मेरे को कुछ मालूम नहीं था कि कब चल रही है कब नहीं चली। तो अब रास्ते में जब बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पर पता लगा कि ये, क्योंकि मेरी ट्रेन आ रही थी बठिंडा की तरफ से, उनकी दूसरी तरफ से। तो वहाँ पर ये कह रहे थे कि जो ट्रेन जा रही है
उसको निकाल निकाल के हिंदू सिखों को मार रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं बचते या नहीं बचते, पर खैर गाड़ी चली गई, निकल गई बॉर्डर से मेरी। तो अब फादर का मेरे को कोई पता नहीं था। तो जब बठिंडा पहुँचे तो गाड़ी को रोक लिया। बठिंडे में आए तो देखा लंबे चौड़े सिख जाट तलवारें पकड़ी उन्होंने हाथ में, और उन्होंने लोगों को हर गाड़ी के डिब्बे में घुस के निकालना शुरू किया। और वो मुसलमानों की निशानी थी, कहते थे पजामा उतारो या पैंट उतारो, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो जो ठीक थे, यानी हिंदू या सिख थे, उनको तो छोड़ रहे थे। मुसलमान थे उसको नीचे उतार के एकदम गर्दन काट रहे थे। ये ऐसा मतलब कि एटमॉस्फेयर था कि अपना दिल हिल गया। हमने कहा ये तो चाहे हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है, कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं दिल्ली पहुंच गया। फिर मेरे उन टेलीफोन भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे को फादर का कुछ पता नहीं लगा। 4 दिन के बाद वो दिल्ली सारी फैमिली को लेके दिल्ली आ गए। और मेरे चाचा जी रहते थे दरीबे में हम पहुंच गए। दरीबा ये दिल्ली चांदनी चौक के पास है। और बस फिर उसके बाद तो 15 अगस्त आ गया। But so what if New Delhi is, as one would claim, a Parvanu city? It was recreated by those who had lost everything in the partition of the subcontinent. They succeeded, and as a result of their efforts, they created the first truly post-colonial Indian city. At a time when many Indian cities are debating on the local versus outsiders issue, Delhi continues to play host to people from all over the country and even outside India. So much so that people feel they are no more outside of their native lands. So while Bengalis, who moved in after the creation of East Pakistan, today known as Bangladesh, have a Chittaranjan Park, there are Punjabis and Haryanvis too, who have a major clout, thanks to being the early movers and their proximity respectively. In the north of Delhi, just beside the Yamuna, Tibetans too have found a home to escape the Chinese aggression. The Indian government offered refuge to Tibetans in Delhi at a place commonly known as Majnu Ka Tila. शुरू में तो ये कॉलोनी नहीं था, तो कई अलग अलग करके शुरू में ये इस कॉलोनी पहले राइज हुआ, मतलब बुद्ध विहार मोनास्ट्री, जहाँ पे बुद्ध विहार बोलता है विला रोड पे, वहाँ 18 फैमिली आके बसा है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गया। 18 फैमिली शुरू में 18 फैमिली शिफ्ट हुआ, तो 1960s की बात है ये। Often called the Little Tibet in Delhi, this colony was originally set up to house a few Tibetan refugees. Decades later, not only has this little colony market grown in size, but its name and fame have also spread far and wide. It is today popularly known as the Monastery Market.
New Delhi is the one place where Indians of every class benefit from relating to and seeing themselves in the eyes of the outside world. The symbol of this New Delhi, different from its precursor of Old Delhi, is best captured in its new heart. Not far away from the Red Fort, the Connaught Place. At the time of the British Raj, they thought of a market in the shape of a horseshoe would prove lucky for both shoppers and shopkeepers. Connaught Place acts as an entry point to the whole of Lutyens' Delhi. Being the central business district of Delhi, Connaught Place portrays a vibrant character with office and shopping related activities. वज़ीर दियाल यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर। उनकी देख रेख में पार्लियामेंट हाउस बना, उनकी देख रेख में ये क्राउन प्लेस बना और उनकी देख रेख में ही ये सारा डेवलप हुआ एरिया जो है। तो उनका लड़का था राजेश्वर दयाल, उनको सिनेमा का शौक़ था, तो उन्होंने यहाँ सर शोभा सिंह जो थे जो मालिक थे क्राउन प्लेस के, उनसे कहा ये लड़के को शौक़ है सिनेमा का, उन्होंने कहा सिनेमा हॉल बना दो, तो ये सिनेमा हॉल बना दिया। नवंबर 2006 में दूसरे मालिक आए हैं जो कि जम्मू की पार्टी है वी के महाजन। अब उनकी देख रेख में ये सिनेमा चल रहा है। और रीगल सिनेमा बहुत पुराना सिनेमा है। उस टाइम पे इतने सिनेमा हॉल नहीं होते थे। लोगों का क्रेज़ ये रहता था कि हम रीगल में पिक्चर देखें। लॉर्ड माउंट बैटन आए यहाँ, जवाहरलाल आए, राजेंद्र प्रसाद आए, इंदिरा गांधी आए, राज कपूर की जितनी पिक्चरें लगी करीब करीब वो सब में यहाँ प्रीमियर पे आते थे, हवन करते थे और अपने सामने एक रील चलवाते थे। फॉरेनर आते हैं, बड़े देख के खुश होते हैं, आज भी यार सिनेमा पुराना ऐसा कैसे ही चल रहा है। तो वो तो हम जब तक ये चलेगा इसको ऐसे रखने की कोशिश करेंगे। समाज की समस्या हो या देश की समस्या हो या कोई और समस्या हो, उस पर खुले दिल से चर्चा कहीं और नहीं हो पाती। इसलिए कॉफ़ी हाउस की जो संस्कृति थी और आज भी जो है उसमें यही परंपरा रहती है कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का लिहाज, उसकी कदर, भावना, सम्मान करते हुए कैसे इंसानियत की सेवा की जाए, आदमी की सेवा की जाए, ये अभी भी संस्कृति इस रूप में यहाँ पर जिंदा खड़ी है। This gallery was basically started as a gallery for the young artists. We still maintain that principle and we try to catch hold of the younger talent at their onset and expose their art. I have seen all of them as a child here, like Mr. Hussain used to be here all the time, Mr. Swaminathan was